ऑन December 29th खेला जाएगा बिग बैश लीग का मैच नंबर 19 between two very strong, successful and informed teams, Sydney Thunder and Melbourne Stars. मेलबर्न स्टार्स ने अब तक 4 गेम खेले हैं, 2 वो जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 हुआ है रद्द ड्यू टू रेन्स एंड दे आर एट रैंक नंबर 4. ऑन द अदर हैंड सिडनी थंडर्स ने भी 4 गेम खेले हैं, 3 वो जीते हैं, 1 हारे हैं एंड दे आर एट करंटली रैंक नंबर 2. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंपेटिटिव गेम होने वाला है एट द मानुका ओवल कैनबरा स्टेडियम ऑन December 29th. लेकर आ गया हूं वंस अगेन आप सबके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड एनालिटिकल क्रिकेट बेटिंग टिप्स जिसको यूज करके होपफुली यू कैन मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी विद इट. टिप नंबर 1, कैनबरा के स्टेडियम में अब तक हुए गए 5 गेम्स में फर्स्ट इनिंग की एवरेज रही है 166. सिडनी थंडर ने जब भी बैटिंग करी है दे हैव स्कोर्ड 147, 180, 156 and 209 was the first time that they actually batted first and they scored humongous 209 runs. In case Sydney Thunder happens to bat first at the Canberra ground, first inning score easily will cross 155. Sydney Thunder की बैटिंग फॉर्म एंड कैनबरा की पिच बहुत अच्छा ग्राउंड डेफिनेटली विल इंश्योर कि टीम सिडनी थंडर will score easily over 155. So once Sydney Thunder gets to bat first, make sure you put your money on it. Tip number 2, the first ball score. Now अब तक बिग बैश लीग में 30 इनिंग्स में 15 इनिंग्स में कोई पहली बॉल पे कोई भी रन नहीं गया है. ऑन द अदर हैंड 15 इनिंग्स में या तो गए हैं 2 रन या 1 रन या सिर्फ एक बार बाउंड्री. If you really want to be very safe, you can opt for less than 4, which means less than a boundary. However, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, put your money on the first ball score for Melbourne Stars, 0 runs. Melbourne Stars ने अब तक खेले गए 4 इनिंग में स्कोर किया है 0, 0, 0 and 1 in the first ball of their innings. So if you are into somebody जिसको लेना है थोड़ा सा रिस्क, put your money on Melbourne Stars first ball score 0. You may just end up making some money because the way they have been playing, it looks like they're not somebody who wants to really score off the first ball. So good option and good opportunity for us to make some money. Tip number 3, the first session, the first 6 overs. So 4 over power play के and 2 over now a normal field. Tip number 3, सिडनी थंडर ने अब तक स्कोर किया है 42, 45, 32 एंड 70. कैनबरा का एवरेज रहा है फर्स्ट इनिंग का 45. सो इजीली यू कैन पुट योर मनी एट 40 प्लस स्कोर on the first session, this first 6 overs. So the moment the game gets started, 40 plus is an easy score. Sydney Thunder ने हमेशा वो अचीव किया है. Both the batsmen Usman Khaja and Alex Hales have now picked up the form. They really look good in attacking and I really think 40 should be an easy score to achieve in the first 6 overs of this game. Tip number 4, match 50. Now yes, I will say इस मैच में ज़रूर 50 होगी. अब तक के खेले गए 15 गेम्स में 13 गेम्स में हुई है 50. Somebody or the other has scored a 50. सिडनी थंडर ने 4 में से 3 गेम्स में एंड मेलबर्न स्टार्स ने 2 गेम्स में करी है 50. So they both a 50 scoring team. 2 गेम्स में 50 नहीं गई थी एंड येस बोथ द टीम सिडनी थंडर एंड मेलबर्न स्टार हैव मिस्ड आउट. इनफैक्ट सिडनी थंडर और जो अभी गेम हुआ था लास्ट वाला उसमें कैनबरा में कोई भी 50 नहीं गई थी. देयरफॉर आई इवन फर्दर स्ट्रांगली बिलीव कि इस गेम में 200% 50 जाएगी एंड आई अश्योर यू आप प्लीज इस पे जरूर पैसा लगाइएगा. यू विल गेट अ रिटर्न ऑन इट. मेक श्योर यू पुट योर मनी. दिस इज अ गारंटीड 100% sure shot return.
टिप नंबर 5, मोस्ट मैच फोर्स। नाउ सिडनी थंडर ने 4 गेम में 61 बाउंड्रीज लगाई हैं। ऑन द अदर हैंड मेलबर्न स्टार्स ने 3 इनिंग्स में करी हैं 32, विच इज एन एवरेज ऑफ ओनली 10, वेयर एज सिडनी थंडर इज हिटिंग एट एन एवरेज ऑफ 15। सिडनी थंडर ने इस कैनबरा ग्राउंड में ये उनका चौथा गेम होगा, सो दे अंडरस्टैंड द डायमेंशंस, दे आर फेमिलियर विद द पिच, फेमिलियर विद द ग्राउंड. Definitely they have a good stand, chance to really score very very good. On the other hand, Melbourne Stars ने भी यहाँ पे 2 गेम खेले हैं, दोनों ही गेम वो जीते हैं, but they aren't really hitting as many boundaries as Sydney Thunder. This is definitely a medium risk bet, but Sydney Thunder, the way they are playing, the way they are really hitting, the familiarity with the ground really gives them an extra edge. So Sydney Thunder पे ज़रूर bet लगाइएगा for this. There is a very good chance that they will hit more boundaries than Melbourne Stars. तो ये थी मेरी 5 क्रिकेट बेटिंग टिप्स फॉर द अपकमिंग गेम ऑन December 29th, द मैच नंबर 19 बिटवीन सिडनी थंडर्स एंड मेलबर्न स्टार्स. अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, जिनको भी क्रिकेट बेटिंग करनी है ऑन दिस पर्टिकुलर गेम. एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज लॉट्स मोर वीडियोज आर कमिंग योर वे. Until then, Khuda Hafiz, Sayonara, ciao ciao.